This conference will now be recorded. I just share my screen. I hope you're able to see it, right? Yes, sir. Able to see. Okay, so let's just start from very basic. Try to understand about the concept and the importance of virtualization, which is really important for us. So, as per the name suggests, जब भी हम virtualization की बात करते हैं, which is most of organization, up to 90% organization prefer to use virtualization activity. So, it's our responsibility. We should know about कि actual में virtualization होता क्या है, कौन कौन से टूल्स हैं जो वर्चुअलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे मींस एक इंडस्ट्री लेवल पे किस तरीके के टास्क हमें किस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है इफ वी वांट टू प्रेजेंट आवर सेल्फ एज ए वर्चुअल इंजीनियर. ठीक है, सो आई होप यू ऑल ऑफ यू आर अवेयर अबाउट द मीनिंग ऑफ वर्चुअलाइजेशन. अकॉर्डिंग टू यू गाइस, एक सिंगल वर्ड में हम वर्चुअलाइजेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डेफिनेशन में तरह से बोलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अब नॉट वैसे इन पता है कि नहीं, नॉट इन प्रॉपर, जो आपको समझ में आता है, यू जस्ट नीड टू डिस्क्राइब ना. आई एम नॉट सेइंग कि पूरा कोड टेक्निकल हो या किसी बुक में जैसा लिखा है वैसे ही चाहिए. जस्ट वांटेड टू नो अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग इन वर्चुअलाइजेशन. गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? फिजिकल से हार्डवेयर को ना मैनेज करके सीधा एक नेटवर्क सॉरी वर्चुअल पे ही मैनेज इजी से उसको मैनेज करना और उसको एक्सेस करना फिजिकल हार्डवेयर को नहीं यूज करके. फिजिकल हार्डवेयर का प्रॉपर्टीज को हम वी आर लेवरेजिंग इट टू मेक द मोस्ट यूज ऑफ द फिजिकल हार्डवेयर. जैसे कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम इफ इट्स यूजिंग normally system uses 10 to 20% of physical hardware, so rest of the hardware we can leverage it and get it utilized on some other systems or some other we can get it worked on some other applications. So that is what virtualization is. Okay, so we can say that in case of virtualization, we just need to install one application and multiple user able to use single application. So virtualization may be for our software. Virtualization can help us to divide our hardware. Means किसी भी तरीके का virtualization हो सकता है ना, which is applicable for both. It may be for software, it may be for hardware, both. किसी भी केस में हो सकता है. Is it correct? Yes, sir. Virtualization हम दोनों पार्ट में यूज कर सकते हैं ना. हार्डवेयर के केस में भी वर्चुअलाइजेशन इस्तेमाल होता है, सॉफ्टवेयर के केस में भी हम वर्चुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं. करेक्ट? प्लीज कंफर्म. यस सर, हार्डवेयर के केस में भी करती हैं वैसे, और सॉफ्टवेयर के केस में भी करी है. ग्रेट, नो प्रॉब्लम. सो लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड अबाउट द वर्चुअलाइजेशन टूल. उसके बाद फिर हम बात करेंगे वर्चुअलाइजेशन के टाइप्स के बारे में, हाइपरवाइजर 1 और हाइपरवाइजर 2 के बारे में. वी विल प्रोसीड फॉर नेक्स्ट. सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट वर्चुअलाइजेशन टूल. कितने तरीके की वर्चुअलाइजेशन टूल अवेलेबल हैं और कंपनियां कौन कौन सी वर्चुअलाइजेशन टूल का इस्तेमाल कर सकती हैं. सो फर्स्ट एजेंडा टू अंडरस्टैंड अबाउट virtualization tool. So not only the VMware, we have a number of tools, a number of providers are available जिनकी हेल्प से हम वर्चुअलाइजेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं. लाइक एज अ यू नो दैट VMware का जो प्रोडक्ट है उसे हम ESXi बोलते हैं, VMware ESXi host. If you are using Citrix is a you know about the organization which is help us to provide a Zen server. Citrix Zen server provide करता है वर्चुअलाइजेशन के लिए.
रेड हैट ने ओपन स्टैक बनाया है, ठीक है। वी आर एबल टू यूज हाइपरवाइजर, यू नो दैट माइक्रोसॉफ्ट का हाइपर वी. So these all are the tools which is help us to set up our virtual environment. Is it okay? इनमें से कोई से भी एक टूल ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर करती है अपने इन्वायरमेंट में वर्चुअलाइजेशन सेटअप को इस्टेब्लिश करने. प्लीज कंफर्म इफ एबल टू अंडरस्टैंड. Yes. Yes, sir. Now, second important part for us means, as we just start understanding about the virtualization, so we need to know about from scratch. Second, अगर हम बात करें तो virtualization support. So virtualization support की बात करें तो it support n number of virtualization activity. जैसे मेमोरी में सपोर्ट करता है, वी आर एबल टू कॉन्फ़िगर virtualization for memory, CPU, storage, application and operating systems. ये सभी तरीके के पार्ट में वर्चुअलाइजेशन हमारी हेल्प करता है. वी आर एबल टू क्रिएट अ मेमोरी वर्चुअलाइजेशन. सीपीयू को हम मल्टीपल पोर्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीपल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. स्टोरेज डिवाइडेशन हो सकता है, एप्लीकेशन डिवाइडेशन हो सकता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को भी हम डिवाइड कर सकते हैं. थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट अगर हम बात करें अगले स्टेप की, तो नाउ टॉक अबाउट द वर्चुअलाइजेशन टाइप. तो इन केस ऑफ वर्चुअलाइजेशन टाइप्स की बात करें तो मेनली इसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है. आई होप यू ऑल ऑफ यू अवेयर अबाउट इट. एक अपने पास होता है हाइपरवाइजर, राइट, टाइप 1. दूसरा होता है अपने पास हाइपरवाइजर टाइप 2. सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इन दोनों में गैप क्या है, इन दोनों में एक्चुअल डिफरेंस क्या है हाइपरवाइजर टाइप 1 में और टाइप 2 में. एन एग्जाम्पल, सागर, हाइपरवाइजर टाइप 1 का और टाइप 2 का कोई एग्जाम्पल बताओ. No idea, sir. बिल्कुल. गौरव, डू यू वांट टू ऐड समथिंग हाइपरवाइजर टाइप 1 टाइप 2 में? ESXi, KVM, it all comes under hypervisor type 1 where it directly sits on the hardware. I mean operating system की जरूरत नहीं है वहाँ पे. और टाइप 2 में आपको एक बेस ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत है. जैसे फॉर एग्जांपल यू इंस्टॉल विंडोज एंड ऑन टॉप ऑफ विंडोज you install VMware workstation. जो VMware workstation is basically a type 2 hypervisor. एग्जैक्टली, ठीक है. हाइपरवाइजर टाइप 1 को हम बोलते हैं बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन. इस हाइपरवाइजर टाइप 1 को आप बोल सकते हो बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन, ठीक है. और बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन क्या होता है? इंस्टॉल द टूल डायरेक्ट टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, डायरेक्ट टू द हार्डवेयर, नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड. जैसे इसमें अपने पास कोई एक हाई कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम आपने परचेज किया. फॉर एग्जांपल, यू परचेज वन गुड कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम like as VMware का ESXi is a hypervisor type 1. Zen server is also a hypervisor type 1. And even Hyper-V भी हमारा जो है वो type 1 की कैटेगरी में आता है. You can say that we can install hypervisor type 1 directly to the बेस मशीन. हम इसको डायरेक्टली बेस मशीन पे इंस्टॉल कर सकते हैं. Think about the hypervisor type 2. So it considered as a hosted virtualization.
The meaning of hosted virtualization, like as VMware workstation, we have a virtual PC, या फिर अगर हम बात करें वर्चुअल बॉक्स की, and VMware Fusion की. So these all are considered as a hypervisor type 2. We install type 2 on operating system. Means you must need to use at least one operating system if you want to configure the hypervisor type 2. Is it okay? ये चीज क्लियर हुई अभी क्या? Yes, sir. इसको होस्टेड बोला जाता है क्योंकि इसके लिए ओएस की रिक्वायरमेंट होती है, और हाइपरवाइज टाइप 1 को बोला जाता है बेयर मेटल. So just keep in mind bare metal and hosted. टाइप 1 bare metal है और hosted क्या है, जो आपके पास टाइप 2 में एग्जांपल्स होते हैं. Is it clear? Yeah. Yes, sir. So our responsibility, so as per the agenda, our responsibility to understand each and everything related to the hypervisor type 1. हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हम जो अपने इस पार्ट में कवर करेंगे, ट्रेनिंग में कंप्लीट करेंगे, which is related to the hypervisor type 2, type 1. Because hypervisor type 2 is used for only the purpose of, you can say that कि इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो हम करते हैं to for only for the testing purpose, कि in case अगर आपको कोई issues लगता है real environment के केस में, तो in this case you just need to use with hypervisor type 2. Clear? Yes. Now proceed with next step. अगला जो step कहता है, we just need to understand about the concept of you can say that concept of our hypervisor type 1, और उसमें हम VMware से स्टार्ट करते हैं. एंड आल्सो जस्ट वांटेड टू नो अबाउट कि जो सेटअप है आपके पास इन्वायरमेंट में, उसमें ESXi का कौन सा वर्जन है? So currently मेरे पास 6.5 है. We are planning to upgrade to 7. अच्छा, but most of organization, as per my experience in virtualization, I'm also taking care of up to 8 to 10 different clients जिनके सबके पास 6.7 और 6.5, मीन ज्यादातर के पास 6.5 और या तो 6.7 है. About the upgradation, I'll guide you how we can upgrade the environment from ESXi 6.5 But to I think I 6. heard that 6.5 डिसकंटिन्यू भी होएगा कुछ टाइम में. जाहिर सी बात है ना, बिकॉज वी टॉक अबाउट वर्चुअलाइजेशन तो स्टार्टिंग हुई थी 4.0 से, और नाउ वी हैव 8.0 एंड 8.5 की भी प्लानिंग कर रहे हैं. तो एक टाइम के बाद ना दे जस्ट डिसकंटिन्यू या उसको वो सारी सर्विसेज को रिमूव कर देते हैं. सो आई एम गुड विद बोथ. एज पर द रिक्वायरमेंट हम किसी पे भी चल सकते हैं इफ यू वांट. तो अभी तो हम पहले बेसिक बात कर लेते हैं कि ये सब सही है क्या. Get started So में in versions में difference क्या है? मतलब is there anything specific which we need to look into it? For example, just the features, थोड़ा बहुत features ऊपर ज़्यादा कम रहेगा, सिर्फ उतना ही है, या is there anything else? no see, actually think about it कि किसी भी कंपनी को वर्जन लाने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है. ठीक है, किसी भी कंपनी की बात कर लें, नॉट ओनली विद ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अलावा भी अगर हम मोबाइल केस की बात करें, ठीक है ना, मोबाइल फोन की बात करें, तो मोस्टली अगर मोबाइल डिजाइन भी हो गया तो उस केस में वो डिफरेंट डिफरेंट अपडेट भेजते रहते हैं, राइट. मीन्स जो जिनका बजट नहीं है नया मोबाइल परचेज करने का, एटलीस्ट वो अपने मोबाइल फोन को मेंटेन रख सके. मेंटेन इन द सेंस कि वो एटलीस्ट उसमें कोई इशू ना आने दे. तो अपडेट की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है, अपडेट की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है, नया ओएस लगाने की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है
ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। सिक्योरिटी हो गया, जीयूआई हो गया, और उसके अंदर मल्टीपल चेंजेस हो गए, तो वो सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। Okay. But in versions में like you guys specifically mentioned like 6.7, 7.0, अब कुछ 7.0 कुछ download के लिए available है. So it is only the bug fix uh, which is there in it, or is it something anything specific to uh, like the overall architecture, the way how it is deployed, or underlying architecture, the way how it's working, it gets differed. Yeah, it must be a different, because what happened in case of means the deployment process are same, but they give you a number of services, means those services can help us to maintain or manage the environment. Like as if we talk about the latest ESXi, so in case of latest, it give us option to manage the services by using the automation, जो कि पहले नहीं था। ठीक है, जैसे जैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व की जाती है ना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के केस में दे गिव अस अ एन नंबर ऑफ सर्विसेज, वो हमें मल्टीपल सर्विसेज भी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर? Okay, got it. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द नंबर ऑफ ESXi hosts are available in market, because we should know about कि कितने तरीके की ESXi host हो सकते हैं। So ESXi host started, पहले इसी को ESX बोला जाता था 4.0, then ESX again 4.5, then they converted it into the ESXi host 5.0, 5.5 भी आया था मार्केट में, ESXi 6.0, ठीक है, these all are the types of ESXi host। ठीक है, Yes, sir. okay, so it's our responsibility, we should know about each and everything। So just wanted to know हमें कौन सा ESXi स्टार्ट करना है। In my organization, if I'm not wrong, it is 6.7, and in my Mhm. home lab, it is 7. Like recently downloaded, so I believe it's 7. Okay, लेटेस्ट से ही स्टार्ट करते हैं, राइट? Yes, sir. I think we can go with 7. सागर, व्हाट अबाउट यू? So I think we can go with 7. No issue. So how about this AWS and Azure? Is it using the similar kind of technology or the same way? Is it something like that, or AWS Azure uses their own different flavor of base operating system? Actually, they never disclose which types of technology they are using in backend. Oh, okay, okay. No one can disclose. No one can disclose. Although they are using OpenStack, or what we can say that hypervisor or VMware virtualization, but they never disclose with any customer. Got it? Due to the reason of security. Okay. But VMware discloses it. They have shown it to the world like this is what we are doing, right? No, no, VMware is a kind of private environment. It's a kind of dedicated virtualization. Okay, I'm sorry, you lost me there. What do you mean by dedicated? Like,
Dedicated in the sense means you must need to establish your own hardware, and then you are able to install your VMware tools. Cloud is a kind मतलब of provider जो हमें यूसेज का पेमेंट देना पड़ता है इसके लिए. but I guess VMware का भी जैसे कि like you use so many resources you have to pay वैसा है ना उनका. VMware के केस में आप आई डोंट थिंक VMware establish our cloud environment. VMware ने अपने कुछ प्रोडक्ट इन्हीं क्लाउड इन्वायरमेंट पे रख रखे हैं. Okay, okay, fine. I think I ठीक. got it now. No, VMware on cloud. ठीक है. Yes, we have option to establish our VMware setup over cloud, but उसके लिए भी हमें या तो AWS पे जाना होगा या फिर आप Azure पे जाएंगे. VMware का अपना खुद का कोई पोर्टल नहीं है जहाँ पे वो इस्टेब्लिश करें. vCenter Cloud बोलते हैं ना, that is VMware Cloud, right? VMware, which is cloud on VMware, which is considered as a cloud on VMware. VMware on cloud. Okay. ऐसे So कोई when you VMware say का कोई सेपरेट सेटअप नहीं है. so when you say cloud, it basically means that it has a physical hardware जो data center में रहेगा, and on that we use virtualization और उसके ऊपर जो tools चाहिए वो deploy करके customers को दिया जाता है. Am I right? Is that how it is? Exactly. Okay. ठीक है. Can we proceed for next? Yes, yes. Yeah. Sure. Next, let's talk about establish how we can establish our setup with ESXi 7.0. अगला जो एजेंडा है हमारा, we just try to understand about the step, but उसके पहले we just need to know about the core feature of ESXi host. As we discussed before, ESXi is a type of bare metal virtualization, right? So हमें इसको किसी बेस मशीन पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं. But in case of training setup, we must need to use at least one third-party tool. Third-party tool in the sense I'm talking about Hypervisor type 2. Installation of ESXi host. Let's talk about the prerequisite. Prerequisite in the sense कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या रिक्वायर्ड है, सॉरी हार्डवेयर में क्या क्या चीजें चाहिए हमें इंस्टॉलेशन के पहले. Minimum required 4 gig of RAM. About the CPU required 2 core of CPU and HDD 60 gig and at least
1000 Mbps network adapter. ठीक है, these all are the prerequisites जो हमें अपने environment में सेटअप करना है. क्लियर? किसी भी ESXi 7.0 को इंस्टॉल करने के लिए हमें इन सभी हार्डवेयर को ध्यान में रखना पड़ेगा. क्लियर? ये सर ये सर आप मतलब लैब के अकॉर्डिंग बता रहे हो या मतलब वैसे जो बेयर नहीं, मेटल पे करेंगे तब के लिए? बेयर मेटल पे भी करेंगे या लैब के लिए तैयार करेंगे तब भी. बाकी अगर रियल इन्वायरमेंट की बात करें तो रियल इन्वायरमेंट में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. यू मस्ट नीड टू कैलकुलेट आपको कितने नंबर ऑफ वर्ड VMs चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे ना, ऐसे नहीं हो सकता. तो लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू डाउनलोड. उसके बाद कैलकुलेशन मेथड देखेंगे कैसे आप कैलकुलेट करते हैं. तो स्टेप फर्स्ट, how to download VMware software. Not only the ESXi, किसी भी टूल को डाउनलोड करने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को डाउनलोड करने के लिए you just need to sign up ourselves over a VMware site, right? मैं आपको इसका practically दिखा देता हूँ कि how we can do that. Create account on VMware site. It gives us option to download anything. आप किसी भी ब्राउजर को ओपन करेंगे, टाइप गूगल और यहाँ पे आपको टाइप कर देना है डाउनलोड ESXi 7.0. although I have already downloaded. VMware vSphere पे जाएंगे, should be download through the VMware site. ठीक है, we are able to find a number of version of ESXi 7.0 or 6.1, 6.5. a number of versions are available. तो आपको सिंपल सा 7.0 पे जा करके go to download पे जाना है. It will ask you related to what we can say that registration करने के लिए पूछेगा या just need to click on download. सर एक मिनट, एक पेज पीछे जाओ. This one? Yes. What is this essentials plus? These all are the types of segregation. Means you know that key. These are the flavor of our vSphere ESXi, which is categorized in various parts. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे. If we compare it with our server machine, so you know that in case of server operating system, we have a data center, we have a standard enterprise. As it is in case of ESXi, they also categorize in different flavor of our ESXi. Clear? सही मतलब कोई लाइसेंस टाइप है ऐसा कुछ? Yeah, this is the type of license ना, definitely इसके बीच में तो license आएगा ही ना. मतलब essential will use only it can use maximum of so many resources, or it can support so many of virtual machines. Essentials में उसके थोड़ा ज्यादा रहेगा और standard में और थोड़ा ज्यादा रहेगा, वैसा है? Exactly, you will get up features like जो कुछ चीजें रहती हैं जो आपके स्टैंडर्ड में सपोर्ट करेंगे, कुछ चीजें रहेंगी जो आप इंटरप्राइज में इसको यूज कर सकते हैं. So as per the client requirement, as per the setup that you want to establish, according to that you need to proceed and install. Okay. ठीक है, and जो भी यहाँ पे ISO इंस्टॉल करेंगे, आप डाउनलोड करेंगे, विच इज अप्लीकेबल फॉर 60 डेज. अगर आप उस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, उस ISO इमेज का इस्तेमाल करेंगे ना, विच इज अप्लीकेबल फॉर 60 डेज. आफ्टर 60 डेज यू नीड टू परचेज द कीज. बट ये जो 60 डेज का फ्री ट्रायल मिलता है ना हमें, उसको कैलकुलेट करने के लिए व्हाट हैपन, अगर आपने ESXi ऑन करके छोड़ दिया, ठीक है, तो आपके जो लाइसेंसेस डेज रहते हैं ना, वो लेस होना स्टार्ट हो जाएंगे. अगर आपने ESXi को बंद कर दिया और 2 दिन बाद फिर से टर्न ऑन कर रहे हैं ना,
तो उस केस में आपको 60 डेज फिर से असाइन हो जाएंगे। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? मतलब सर शट डाउन कर देंगे तो फिर वो फर्स्ट डे से काउंट होगा? फर्स्ट डे से काउंट होगा। अगर आपने 2 दिन बाद ऑन किया या 1 हफ्ते बाद टर्न ऑन किया ना, तो आपका डे 1 से फिर स्टार्ट हो जाएगा, फिर से 60 डेज दिखने लगेगा उसमें। So once rebooted, it will extend again completely. एग्जैक्टली। फ्री Okay. ट्रायल के केस में क्या होता है ना कि ऐसा कुछ नहीं है कि 60 डेज आपका तब काउंट होगा जब आप अपने इन्वायरमेंट को कंटिन्यू 60 डेज तक टर्न ऑन करते हैं, तो वो लाइसेंस की इसकी रिक्वायरमेंट करेगा आफ्टर 60 डेज। बट अगर आप टेस्टिंग पर्पज के लिए यूज करना चाहते हैं, 1 हफ्ते तक चलाया फिर से बंद कर दिया फिर से ऑन किया, तो आपका जो 60 डेज है वो एक्सीड होता रहेगा, एक्सटेंड होता रहेगा। क्लियर? ठीक है। या फिर उस केस में भी अगर ऐसा नहीं भी होता तो आप अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करेंगे सेम आईएसओ इमेज से, फिर से अगेन आपको 60 डेज का मिल जाएगा वैलिडिटी। So instead of uninstalling and reinstalling, rebooting would work, right? Exactly. Because in this case, VMware cannot give you any kind of technical support. लाइसेंस में क्या होता है, आपको प्रॉपर सपोर्ट मिलता है, आपके पास कुछ कॉल्स फ्री मिलती हैं जिससे आप डायरेक्टली VMware से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, बट फ्री ट्रायल में आपको ऐसी सर्विसेज कुछ भी नहीं मिलेगी। Got it. Okay, can we proceed for next? डाउनलोड का प्रोसीजर समझ में आ गया? Whenever we Yes, sir. click on download, it will redirect you on the page of registration. आप जैसे ISO इमेज पे राइट क्लिक डाउनलोड पे क्लिक करेंगे ना, it will ask you, could you please provide me the login detail? तो अगर अपने पास लॉगिन डिटेल है, अगर हमने पहले अकाउंट क्रिएट कर रखा है, then good, otherwise you just need to click on sign up, और साइन अप करके बाद हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। क्लियर? But in our case, I have already downloaded ESXi 7.0, तो हम डायरेक्टली अपने सिस्टम पे चलते हैं और इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर देखते हैं। ठीक है? Okay. ओके, यहाँ पे हमने एक विंडोज 10 का ओएस इंस्टॉल कर रखा है अपने डेस्कटॉप पे, और आई एम जस्ट गोइंग टू यूज सेम डेस्कटॉप टू इंस्टॉल VMware वर्कस्टेशन। ठीक है? एंड अंडर द VMware वर्कस्टेशन हम इस पे इंस्टॉल करेंगे अपने ESXi 7.0 को। इज इट ओके? प्लीज कंफर्म। यस सर। तो VMware वर्कस्टेशन का लिंक भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे ताकि आप डाउनलोड कर पाओ। अभी हम ESXi इंस्टॉलेशन की बात करते हैं। जस्ट नीड टू ओपन आवर VMware वर्कस्टेशन और इस पे एक ESXi होस्ट इंस्टॉल करते हैं। Talk about the procedure how to install ESXi 7.0. So we just need to use the basic step. New virtual machine. Select your ISO image जहाँ पे भी आपने रख रखा है. So in my case, I put it into the external storage. यहाँ पे 7.0 हमने establish कर रखा है. Select करते हैं.
Next. Select the location of your VHD file. So what exactly is this VHD? Is it something where you put all the files into that? जो No. VMware Whenever we create our virtual machine, the virtual machine automatically create multiple VHD file. जब हम VM को इंस्टॉल करते हैं ना, तो ये एक VHD फॉर्मेट में एस्टैब्लिश होता है. So VHD full form क्या है? So which VHD stand for? Virtual hard drive. Virtual hard drive. VHD, virtual hard disk, which is help us to set up our VMware virtual machine. So if we are installing Windows, for example, then all the contents of the or operating system का जो कुछ files है, that will be in वो VHD file के अंदर आके बैठ जाता है. Am I right? It is like a hard disk for virtual machine. Yeah, hard disk for virtual machine. Yes. Oh, okay. ठीक है, सिंपल सा हमने ISO इमेज को असाइन किया और ISO इमेज में बोट करना स्टार्ट कर दिया. It will take up to 5 to 7 minutes जैसे ये इंस्टॉल होता है. I hope you have idea about the procedure कैसे इंस्टॉल करते हैं. Is it okay about Yes, the sir. installation? वैसे आइडिया है सर. चलो कोई नहीं, we need to understand things first ताकि हम चीजों को अच्छे से समझ सकें. सर लैब अजोर पे भी बना सकते हैं क्या? मतलब ऐसा पॉसिबल है कि लैब के लिए भी हम अजोर पे कर सकते हैं? नहीं, एज्योर क्या कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर नहीं बनाता, ऑप्शन नहीं देता हमें लैब के लिए. तो इनका VMware का खुद का सैंडबॉक्स है. ठीक है, आप उनके सैंडबॉक्स पे तैयार कर सकते हो. So we have to pay something for that या फिर वो भी सब? Not required, so fully free. आपको साइन अप करना पड़ेगा. I'll share the link और आप उस लिंक का यूज करके ना एस्टैब्लिश कर सकते हो. क्योंकि सर अगर मान लो सर मैं हार्डवेयर रिक्वायरमेंट इतनी अच्छी नहीं है मतलब सर मेरी मशीन पे, तो फिर मैं सर भी लॉस्ट यूज सर. कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपके डेस्कटॉप लैपटॉप का? सर i5 है, 256 GB SSD है और 8 GB रैम है सर, कुछ ज़्यादा नहीं है. नहीं, इसमें ESXi आप तो बना लोगे, बट डोमेन हाँ वगैरह स्टैब्लिश, नहीं हो शेयर पाएगा स्टोरेज सर. सेंटर नहीं हो पाएगा. कोई नहीं, यस आप ऑनलाइन ही लैब यूज करना पड़ेगा आपको. सर.
What is SAN? Sandbox, they establish our own environment. SAN is a shared storage that can help us to distribute the storage services. Okay, and how much space do we get if we are deploying it there? No. SAN, for the SAN, you are responsible to decide how much space you want to establish. SAN तो हम अपनी तरफ से डिसाइड करेंगे कि कितना शेयर स्टोरेज हमें बनाना है, राइट? वो हमें चेक करना पड़ेगा, वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा. I mean, VMware gives us that option, like you can allocate 500 GB or 100 GB or whatever it is to get it allocated. Is that something how it is? You're talking about the SAN which is used by the VMware, उसके बारे में बात कर रहे हैं? जी हाँ, आपने बताया ना कि that VMware allows you to deploy वो SAN storage पे ये करेगा. Can you just show it once, like what exactly do we need to do there? Sure. I'll show you. So SAN is only for storage, right? Not the processing. Normally, yes, SAN is used to store the data or share the data. Share the space, not data. Okay. तो इसका कहते हैं ESX का लाइसेंस, जो लाइसेंस टाइप होता है सर, उसमें कोई उसमें ये भी डिफाइंड होता है कि कितने कोर CPU तक सपोर्ट करेगा? एग्जैक्टली लाइसेंस की अगर हम बात करें तो लाइसेंस कई चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है. अबाउट द नंबर ऑफ सर्विसेज क्या रहेंगी, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन क्या कितना सपोर्ट करेगा, कितने नंबर ऑफ इंस्टेंस VM आप क्रिएट कर पाओगे, उन सब की इंफॉर्मेशन रहती है लाइसेंस के केस में. तो सर जब भी हम जो देख रहे थे एसेंशियल, स्टैंडर्ड, एसेंशियल प्लस, तो वो लाइसेंस के टाइप ही हैं एक तरीके के ESX से? अभी yes, it also decide the SKU, stock keeping unit, means the configuration. Do one thing, I'll share the document means जिसमें प्रॉपर तरीके से मेंशन किया गया है कि किस कॉन्फ़िगरेशन पे आप कितना या किस लाइसेंस पे आप कितने रिसोर्सेज को ऐड कर पाएंगे. ठीक है? आई थिंक आई हर्ड, मैंने पढ़ा है कि मतलब 2 कोर CPU, 2 CPU तक 1000 VM तक बन पाती हैं, ऐसा कुछ मैंने पढ़ा है कि नहीं. ऐसा. It's fully depend upon the vCenter. जो आप vCenter establish करेंगे ना, उसके भी है पे 2 कोर CPU में 1000 VM नहीं होगी, उसका भी कैलकुलेशन मेथड है. We need to know about the calculation method. वो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितने कोर पे कितने CPU आप एस्टैब्लिश कर पाएंगे, कितने VM से ऐड कर पाएंगे. वो हम आगे डिस्कस करेंगे सर वैसे. हाँ, we just इंस्टॉल ही, हाँ, इसके बाद फिर कॉन्फ़िगरेशन पे डिस्कस करेंगे और फिर आगे ठीक है. प्रोसेस. So press enter to continue. F11 again. Again enter to continue. यहाँ पे आपको रूट का पासवर्ड देना पड़ेगा जो आप GUI में एक्सेस करेंगे. We must need to use 7 character.
India@1234 ट्राई करो सर, हो जाएगा। Not enough characters. Actually, मैं ना इसको remote से configure कर रहा हूँ, तो let me check the password through this machine. Okay, it's working. RDP के through actually हमने इसका RDP access कर रखा था ना VM का, so that's why we are able to access the provide the password. Directly हमने system से किया जाकर के, तो it accept normal India@123. Press enter to continue. Again F11. मतलब रिमोट से करते हो कुछ प्रॉब्लम होता है, मतलब इट हाँ, whenever we provide the access of password या कोई setting करते हैं ना, तो उस केस में इशू आता है। ओके ठीक है, इट विल टेक अप टू 5 मिनट। यहाँ पे इंस्टॉलेशन के टाइम पे कुछ फाइल्स इंस्टॉल होगी, उसके बाद फिर हम प्रोसीड करेंगे अगले स्टेप पे टू एक्सेस द वर्चुअल मशीन थ्रू GUI। ओके आप वो सैन वाला लिंक शेयर कर दीजिएगा जी, लैब मैं बनाने के लिए। आपको लिंक भेजता हूँ सैन के लिए। सर हम क्या क्या टॉपिक कवर अप करेंगे इसमें से, वो भी कुछ है कि हम क्या क्या टॉपिक कवर अप करेंगे? वी हैव अ प्रॉपर कंटेंट, नो वरी अबाउट इट। प्रॉपर कंटेंट पे ही चलेंगे हम अपने।
and number of pages are open, so थोड़ा सा wait करें. Meanwhile, our ESXi is ready to use. ESXi 7.0.2 which is installed successfully. आप देखिए यहाँ पे एक IP address मिल रही है हमें 192.168.1.9. DHCP IP address है जो हमारे पास वाईफाई रूटर है, उसने डायरेक्टली इसको असाइन कर दिया है. And now it's our responsibility. We should know about how to handle this ESXi. So we have a various way to access our ESXi home. We successfully installed ESXi 7.0. Now talk about the method to access our ESXi host. तो तीन अलग-अलग method हैं इसको access करने के लिए. We can access through web client. Second, using DCUI port. तीसरा, using SSH यानी पुटी के जरिए. ये तीन मेथड हैं जिनकी हेल्प से हम अपने इन्वायरमेंट को कनेक्ट कर सकते हैं, अपने सेटअप को यूज कर सकते हैं. And as a VM admin, it's our responsibility. We should know about each and everything. Clear? Yes, sir. सर ये DCUI फुल फॉर्म बता दीजिए, मतलब फैक्ट तो पता है SSH. Direct console user interface. Direct console user interface. ठीक है. इसी पैनल को, ये जो अपने पास ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है ना, ये जब आप F2 करके एंट्री करते हैं ना, तो ये आपका कहलाता है DCUI पेज. जब आप इसमें एंट्री करेंगे, which is considered as a DCUI. और वेब का चलो, ये अपने पास कंटेंट है जो हमें कवर करने हैं. These are the content. ये मैं भेज भी दूंगा आपको, ठीक है. Can you hear me guys? Yes sir. Yes, yes, sir. ठीक है, ये सभी टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी ट्रेनिंग में. Is it okay guys? Yes, sir. चलो, यहाँ पे जो IP अभी हमें मिल रही है ना 1.9 की है. So we just need to open any browser. कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लो आप, उस पर डायरेक्टली ये IP एड्रेस मेंशन कर देंगे 192.168.1.9. एडवांस प्रोसीड टू अनसेव. यहाँ पे रूट और पासवर्ड के लिए ऑप्शन आ जाएगा. रूट एंड पासवर्ड जो भी आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे मेंशन किया हो. इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन पेज ऑफ GUI. तो इस पैनल पे जो भी ऑप्शन हमें दिखाई पड़ रहे हैं, मींस जो सर्विसेज दिखाई पड़ रहे हैं, लाइक एज ए होस्ट, मैनेज, मॉनिटर, वर्चुअल मशीन, स्टोरेज, नेटवर्किंग, ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन आवर ट्रेनिंग.
it's our responsibility to configure these services. इन सबको कैसे मैनेज किया जाता है वो हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके ठीक है, एनी क्वेश्चन जो अभी तक हमने डिस्कस किया? No, sir. Looks good for now. Okay, so actually 2 or 3 people also will join our session. All are the working professionals. So I don't know what happened. Join नहीं कर पाए क्योंकि अभी मैसेज आ रहा है कि वो लेट हो गए. So can we continue it tomorrow because sir tomorrow same time? हाँ same Saturday same time morning 8 AM आए. सर कोई और टाइमिंग है वैसे सर आपके पास सुटेबल कोई? आप बता दो. एक्चुअली मेरा एक बैच खत्म हो रहा है अभी, आज ही खत्म होगा VMware का 7.0 का, जिसकी क्लासेस है 2 से 4. ठीक है सर एक्चुअली क्या होता है सर कभी कभी ना सैटरडे को ऑफिस का होता है मेंटेनेंस के चक्कर में, तो जैसे अभी जाना है तो वैसे चलो ठीक है सर 8 से 10 भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. गौरव आपको कोई प्रॉब्लम, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? No, I'm good. I'm in training period, so it's like a honeymoon period for me. ठीक है ओके ठीक है नो इशू, फिर हम 8 से 10 ही रखते हैं. 8 to 10 कर सकते हैं इस वीक के लिए. अगर आप चाहो तो आफ्टरनून में भी कर सकते हैं लाइक एज 2 to 4, बट वो बैच इस वीक हमें फाइनल करना पड़ेगा. ठीक है ठीक है तो कल तो फिर कंटिन्यूस 8 to 10 ही करेंगे फिर. नहीं अभी कल तो क्योंकि आज और कल तो आज और कल तो चेंजेस कर ही नहीं सकते. हाँ ठीक है ठीक है, तो कुछ कैंडिडेट और ज्वाइन करेंगे मे बी टुमारो, तो विल कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो. ओके ओके Oh, yes, sir. ओके एवरीवन, विल शेयर द रिकॉर्डिंग है और आप रिकॉर्डिंग इमीडिएट डाउनलोड कर लेना, अदरवाइज ये जो है ना क्लाउड जो है 3 दिन से ज्यादा नहीं रखता. तो प्लीज डाउनलोड एंड क्रिएट अ वन फोल्डर जिसमें आप ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग्स रखेंगे. क्लियर? Okay. ओके एवरीवन, थैंक यू. आप लिंक शेयर करेंगे सर ट्रेनिंग का या ये? आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ व्हाट्सएप ग्रुप. ओके तो उसमें ओके सारी रिकॉर्डिंग की अपडेट और क्लास की अपडेट वो ग्रुप में आपको मिलती रहेगी. जस्ट वेटिंग फॉर फ्यू मोर कैंडिडेट्स, so that's why not created any group. ओके सर गॉट इट. Okay everyone, thank you. थैंक यू बाय. Thank you, sir. Bye. Bye.